Guys, can you hear me? Or can you see me? Let's check. Assalamu alaikum, Rafe. Assalamu alaikum, everybody. I hope you guys are doing well. Hello, Einstein. What a name to have. Yes, Merunissa, we will be having one for the AS session as well. मैं announce करूँगा इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम अमीर, अस्सलाम वालेकुम मोइज़. अच्छा जी, सो आज के पेपर का जो लिंक है वो इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है, प्लीज़ वहाँ से जाके ले लें जल्दी से. A2 का भी इंशाल्लाह इसी वीक में करूँगा. AS का भी करना है और A2 का भी करना है. अस्सलाम वालेकुम सारा, अस्सलाम वालेकुम मीना, अस्सलाम वालेकुम अमीर. How's the जोश everybody? एग्जाम्स आने वाले हैं. ज़रा, are you feeling pumped to go for them or are you feeling scared? Assalamu alaikum Muntaha, welcome. Assalamu alaikum Miraj, welcome. Yes, this is going to be recorded and will be put up on YouTube. When you have little time left, you should be doing yearlies, yes. पढ़ाई नहीं हो रही रमज़ान में, चलो यार कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन आप सबके सामने. डू यू ऑल हैव द पेपर? Yes, sir, 10 years are good. Assalamu alaikum Ahmed. Yes, this will be available on YouTube later. Definitely. So पहला सवाल देखते हैं जी. पहला सवाल ये कहता है कि ये बताएं why the pressure at that depth is greater than the atmospheric pressure. So आप C के अंदर हो. Why will the pressure over here be more? इस पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा क्यों होगा? Because atmospheric pressure के अलावा you will have pressure due to the water. And together they act at this point. So here the total pressure will be the atmospheric pressure plus the pressure due to the water. Does that make sense? So इसका जवाब क्या लिख रहे हैं? इसका जवाब आप ये लिख रहे हैं that the pressure, extra pressure is caused due to the weight of the water. State one other quantity besides these quantities. कहता है और quantities बताओ besides these quantities which cause the pressure in liquid. तो क्या जवाब है उसका? बताएं in the chat. शाबाश. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा
ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगा, बिकॉज आपको पता है फॉर्मूला है प्रेशर का रो जी एच. सो यू कुड से डेंसिटी, you could also say gravitational field strength, correct? Well done. आगे चलो. अब वो कहते हैं pressure due to 25 meters of sea water is this. Calculate the total pressure at this depth. अब total pressure निकालने के लिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको atmospheric pressure plus water pressure करना पड़ेगा. सो एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका है 1.05 इंटू 10⁵. वाटर प्रेशर आपका है 2.55 इंटू 10⁵. ऐड करो दोनों को इन योर कैलकुलेटर. 2.55 प्लस 1.05, you will get 3.6 into 10⁵ pascals. Are you guys with me so far? So आपको atmospheric pressure भी given है right here. आपको pressure due to water भी given है right here. You just have to add them. Make sure that you don't forget to write the units along. Pascals will be the units. Let's look at the next part. The next part says, as the diver holds his breath and descends to a depth of 25 meters, the greater pressure causes the volume of the air trapped in the lungs to change. When he's on the board, the total volume is 6,000. Calculate the volume of air at a depth of 25. So this is a question of Boyle's law, which is P1 V1 is equals to P2 V2. आज का पेपर बड़ा ज़रूरी है बिकॉज मैंने इसके अंदर आप लोगों के साथ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी डिस्कस करना है. So stay focused. Now, let's assume कि जी ये हमारी वो सी थी जो मैंने पहले ऊपर ही बनाई थी. अब जब वो इस पॉइंट पे है at the bottom, इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना है? 3.6 इंटू 10⁵ pascals. अच्छा, इस पॉइंट पे हमें निकालना है वॉल्यूम कितना है. I don't know what the volume is. Volume I have to find. But when he's here, इस पॉइंट पे कोई बता सकता है मुझे प्रेशर कितना होगा? Can somebody tell what will be the pressure at that level? Weight of water की जगह can we write pressure of water? बिल्कुल लिख सकते हैं. लेकिन वो प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है? वेट की वजह से आ रहा है. तो इसलिए वेट इज़ द फोर्स, राइट? वो एक्स्ट्रा फोर्स क्यों लग रही है? जी बिल्कुल. सो एट दैट लेवल द प्रेशर इज 1.05 इंटू 10⁵ pascals. अब इस लेवल पे हमें वॉल्यूम निकालना है V2. V2 हमें गिवन है, V1 हमें निकालना है. V2 की वैल्यू है जी 6000 cm3. So let's do P1 V1 is equals to P2 V2. P1 is 3.6 into 10⁵ into V1 is equals to P2 is 1.05 into 10⁵ into 6000. तो जवाब बताएं जी V1 का क्या आता है? What is the value of V1? 1.05 into 10⁵ times 6000 divided by 3.6 into 10⁵. You should get 1750 cm³ as your answer. Arij, this is a mix of different years, so you'll have to look at it through my Instagram. Instagram में पेज खोलो और वहाँ से उसको उठा लो. सही है? 1750 cm³. तो जवानो उसके ऊपर इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें और भी लगाने वाले हैं जिसके अंदर फ्लैश कार्ड्स हैं फॉर रिविजन. तो मेक श्योर दैट यू फॉलो इट. ये क्लियर है सबको?
वेल डन, यू गाइस आर रियली स्मार्ट. आगे चले. शाबाश. जवानों अभी क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ. क्वेश्चन 3 में वो कहता है यू हैव द फ्लेम ऑफ अ बंसन बर्नर. A thermocouple thermometer contains a voltmeter is used to measure the temperature in the flame of the Bunsen burner. On figure 3.1, draw a label diagram of the structure of a thermocouple thermometer as it measures the temperature in the flame. So, क्या करेंगे आप? थर्मोकपल के लिए याद रखें that you always have two junctions. And you always have two metals. Call this as metal 1 and call this as metal 2. इधर मैं एक स्टैंड बनाऊंगा. उस स्टैंड के ऊपर मैं एक बीकर रखूंगा और इस बीकर के अंदर मैं रखूंगा क्रश्ड melting ice. Guys, what is the temperature of crushed melting ice? What is the temperature of crushed melting ice? शाबाश, बताओ. It's 0 डिग्री सेल्सियस. एग्जैक्टली. सो आपका एक जंक्शन होता है जिसको आप बोलते हो कोल्ड जंक्शन, और दूसरा जंक्शन जो होता है, जो हॉट जंक्शन होता है, उसको आपने रख देना है फ्लेम के ऊपर, और ये वोल्ट मीटर एक रीडिंग दिखाएगा हमें. डू यू गाइस अंडरस्टैंड द सेटअप? अब सवाल ये कि हम इस रीडिंग को टेम्परेचर, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग को टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो बड़े गौर से सुनो. तो जवानों करते ये हैं कि हम 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नोट करते हैं हमारा वोल्टेज कितना था, उसको हम बोल देते हैं V0. फिर हम 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नोट करते हैं हमारा वोल्टेज कितना था, उसको हम बोल देते हैं V100. क्या यहां तक आप लोग मेरे साथ हो? क्या आप 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वोल्टेज मेजर करते हो वोल्ट मीटर से, इसी सेटअप के थ्रू? फिर 100 डिग्री सेल्सियस मेजर करते हो इसी सेटअप के थ्रू? क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब हमारे पास एक अननोन टेम्परेचर है T. T इज अननोन, लेकिन मुझे उस पे वोल्टेज मालूम हो गया. उस अननोन टेम्परेचर पे मुझे वोल्टेज मालूम हो गया. So through calibration, can I find out what this voltage, can I find out what this temperature will be? अगर मुझे 0 पे मालूम है, मुझे 100 पे मालूम है, मैं प्रोपोर्शंस यूज करके ये अननोन टेम्परेचर निकाल सकता हूं. अगर मैं आपको कह दूं कि मुझे VT भी मालूम है, कर सकते हैं ना? समझ आ रही है? तो आपने यही चीज हमें समझानी है इस पार्ट में. कहता है डिस्क्राइब हाउ द फिक्स पॉइंट्स एंड द रीडिंग्स ऑफ द वोल्टमीटर आर यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू द टेम्परेचर इन द फ्लेम. तो आप यहां पे यही बोलेंगे, यू विल मेजर द वोल्टमीटर रीडिंग at 0 degree Celsius is V0. The voltmeter reading at 100 degree Celsius
is V100. The voltmeter reading at the unknown temperature जो निकालना है, that is Vt, and you will say, since the temperature is proportional to voltage, the unknown temperature will be found. By comparing Vt with V100 and V0. क्या ये क्लियर आपको? ए लेवल का भी सीन बन रहा है जी, इंशाल्लाह ए लेवल का सीन इसी हफ्ते में, मोस्ट प्रॉब्ली कुछ कल होगा। असल में वो ऑड नाइट्स भी आई हुई हैं जिसके ऊपर इबादत करनी होती है, तो थोड़ा सा स्केड्यूल ऑफ हुआ हुआ है, बट इंशाल्लाह ज़रूर करना है। हम इस तरह पॉइंट्स पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सवाल आता है, आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मेरी क्लासेस लेते रहे। हमेशा पूछा जाता है कि जी हम लाइन के नीचे लिख सकते हैं या हम ज़्यादा लिख सकते हैं। तो द आंसर टू दैट इज़ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 100%, विदाउट अ डाउट। ओके, नाउ आगे चलो। The thermocouple thermometer is used to measure the temperature in the flame because it can measure a very high temperature. Say and explain one other advantage of using a thermocouple. और thermocouple का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, जो असल फ़ायदा उसका वो ये है that it can measure rapidly changing temperatures. अली हैदर, अभी से नीयत ख़राब होगी तुम्हारी। Measures rapidly changing temperatures. Because it has a very low specific heat capacity, or you could say sensitivity is high. Yes, आपने वजह बतानी है। वजह उसकी ये है that it has a very low specific heat capacity. क्या बात है। तो जवानों समझ आ गई है? यो लिख दो चैट के अंदर ताकि मुझे पता चल जाए यहां तक सारे मेरे साथ हो। और ये पता चले कितने बॉट्स बैठे हुए। हाउ जी, चलें आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन। अच्छा यार, क्वेश्चन 4 बड़ा ज़रूरी है, बड़े गौर से सुनना है क्वेश्चन 4 को। सीन ऑन है बॉस, चलें। Let's do it. So, calculate the wavelength in glass of light from this laser. You have the frequency, you have the speed of light. ओए मुझे ये बताओ, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ नहीं होती, ये 2 × 10⁸ क्यों लेके बैठा हुआ है? ये क्या सीन किया इसने?
स्पीड ऑफ लाइट तो 3 × 10⁸ होती है, ये कह रहा है 2 × 10⁸ है। क्या वजह है? गलत है सवाल। The answer to this is that it is the speed of light in glass. ग्लास के अंदर, ग्लास सॉलिड होता है ना, सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, गैसेस में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। शाबाश, वेल डन, वेल डन, वेल डन। सो V is equals to F lambda. We will do this experiment as well. अभी करेंगे। स्पीड है 2 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी है 4.7 × 10⁻14 इंटू वेवलेंथ। निकालें जी वेवलेंथ यहां से। सो 2 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4.7 × 10⁻14, आपका आंसर आएगा 4.25 × 10⁻⁻7 मीटर्स। जीकी वालों का फेवरेट वर्ड कौन सा? I was there how many years ago? I think for 12 years ago. Has the word changed? Now, describe an experiment to verify the laws of reflection for light. You may include a diagram in your answer. Guys, listen to this very carefully. अब वक्त ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। जवानों प्लीज नोट कर लो, लिख लो कहीं पे। हमारे पूरे फिजिक्स में all answers will always be given. Listen to this and write this down. All answers will always be given to 2 to 3 SF. याद रखिएगा इस बात को। आपके जितने जवाब होते हैं वो सारे के सारे 2 से 3 SF के बीच में होते हैं। सो कैन यू गाइस टेल मी हाउ मेनी SF इज दिस? 4.25। How many significant figures is this? This is 3 significant figures. तो अब आप मुझे बताओ, जो मैंने आपको रूल बता दिया है, क्या उसके मुताबिक कैन यू गिव द आंसर टू बी 4.3 × 10⁻⁻7 मीटर्स? यस और नो? शाबाश। Absolutely, you can because 4.3 कितने SF है? 4.32 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अच्छा, अब मुझे बताओ, कोई बंदा अगर ये लिख देता है कि जी मैंने आंसर देना है 4 × 10⁻⁻7 मीटर्स, इज दिस आंसर राइट और रॉन्ग? If somebody says it's 4 × 10⁻⁻7 meters, would that answer be right or would that be wrong? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत होगा। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। राहें बिल्कुल कटेंगे। चलें जी, आगे चलते हैं। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट
To verify the laws of reflection of light, you may include a diagram in your answer. Before I go here, I need to show you this experiment very quickly. So guys, I have a laser and I'm going to use this laser to change the angle of incidence. So I can move it here, I can move it here, I can move it here. Experiment में क्या होगा? नीचे आपने रखा हुआ है glass. Can you see I've used glass here? Medium number 2 is glass and medium number 1 is air. And this is a laser. अब आपने क्या करना है? आपने लेज़र यूज़ करनी है, ग्लास के ऊपर इंसिडेंट करनी है. वो लेज़र जो है वो जाके हिट करेगी ग्लास की बाउंड्री को और वहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी. अगला काम आपने ये करना है, बड़े गौर सुनिएगा, अगला काम आपने ये करना है कि आपने नॉर्मल ड्रॉ कर देना. डू यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल. वंस यू ड्रॉ द नॉर्मल ड्रॉ हो गया. जब नॉर्मल आपने ड्रॉ कर दिया उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने ये करना है, आपने ये प्रोट्रैक्टर लेना है और उसको इस पॉइंट पे रख देना है. अब मुझे ये बताओ, इस पॉइंट पे व्हाट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस? व्हाट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस गाइस? प्लीज टेल मी, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? अस्सलाम वालेकुम वली, अस्सलाम वालेकुम लामिया. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? And what is the angle of incidence is 60. Angle of incidence is 60. Angle of incidence is 60. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? अंदाजन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ये वाला एंगल हो गया. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अंदाजन कितना है? टेल मी. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये देखो, ये 30 है, ये 40 है, दिस इज 50 एंड दैट्स 60. So this is around 35. Can you see? Well done, shabash. You guys are really smart. ये 35 है. अब जरा ऊपर आओ और अब मुझे बताओ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? What is the angle of reflection? Angle of reflection will also be the same 60 degrees. So angle of incidence 60 degrees, angle of reflection 60 degrees. Is this clear? So आप एक दफा करोगे ये एक्सपेरिमेंट, ये एक दफा हो गया. अब आपने क्या करना है? अब आपने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है for a different angle of incidence. So you're going to repeat the experiment for a different angle of incidence. Can you guys tell me what is my angle of incidence now? कितना है जी angle of incidence? This is the incident ray. देख के बताएं. What is the angle of incidence now? Well done, 80 degrees. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है?
Andazan, what is the angle of refraction? Shabash, everybody. Good job. Good job. What is the angle of refraction? Well done. Angle of refraction. This is 30. This is 40. This is 50. So this is around 41 degrees. So angle of refraction जो होगा आपका वो 41 degrees होगा. Lovely. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? What is the angle of reflection? Well done. 70, 80. So angle of reflection is also 80 degrees. All right. So coming back. अब बताएं एक्सपेरिमेंट समझ आ गया? एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट ये है कि आपने लेना है एक ग्लास का पीस, उस ग्लास के पीस के सामने आपने रखना है एक लेजर को. That laser is going to emit a light and that light will get reflected. Then you will draw a normal. Got it? आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. You will put a protractor here. You will measure the angle from here to here. This will be your angle of incidence. And you will measure the angle from here to here, and this will be your angle of reflection. And then you will repeat this experiment for a different angle of incidence. Is it clear? Make sense? So far, so good? जी बिल्कुल अहमद. अब आप क्या कर सकते हो, अब चूंकि हमने ये पेपर के ऊपर भी करना होगा, नौशे वी कैन इवन यूज लेजर कंप्लीटली फाइन. पिन भी यूज कर सकते हो, लेजर भी यूज कर सकते हो. आई थिंक लेजर आसान होती है. सिर्फ लेजर में करना ये होता है, एक एक्स्ट्रा स्टेप जो आपको ऐड करना पड़ता है वो आपको ये करना पड़ेगा. यू विल हैव टू ट्रेस the path of the laser to the mirror, which is your incident ray, and then you will say trace the path of the laser away from the mirror and you will call this as your reflected ray. Then you will say draw normal. Then using a protractor, measure angle of incidence and angle of reflection.
as shown. और फाइनल स्टेप में आप लिखेंगे रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस. और इसको आप मिरर लेबल कर देंगे. इसको आप बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. मेक अ वेरी वेल लेबल डायग्राम. इसको आप बोलोगे इंसिडेंट रे. रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन शो करनी है. जी, अगर मैंने आपको क्लास में, बिकॉज मैंने पैसिव सेशन में आपको पिन का तरीका भी सिखाया था, यू कैन इवन राइट द पिन मेथड, दैट्स आल्सो फाइन. You just have to draw one diagram, you don't have to draw multiple diagrams. Is it clear? With me, guys? Chale. Let's look at the next part. Figure 10.1 shows a ray of light traveling in an optic fiber. It strikes the side of the fiber at P. बिल्कुल असबा वो पिन्स वाला भी चलेगा. Now this is your incident ray. The angle between the ray and the side of the fiber is 7 degrees. Determine the angle of incidence. तो बताओ जी, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बना दूँ, what is my angle of incidence? ये नॉर्मल बना दिया मैंने. एंगल ऑफ इंसिडेंस बताएं कितना बनता है. What is the angle of incidence? The angle of incidence will be 83 degrees. It will be 90 degrees minus 7 degrees, which is 83 degrees. Hi, Huria. Huria is my niece. Right, so 83 degrees, and say explain what happens to the ray at P, guys. So the ray at P is going to get reflected, right? We're undergoing this phenomenon which is called what? Tell me in the chat. शाबाश. इस phenomenon को कहते क्या है कि ये ray जो है बाहर ना निकले और अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाए. What will that phenomenon be called? Shabash. This phenomenon is called total internal reflection. Shazib aa raha hai? Iske baad harder question bhi aa raha hai. Don't worry. So you will say that at P, total internal reflection will occur since the angle of incidence is more than the critical angle. Got it? And now let's move on. A room is illuminated by wall lamps. Figure 10.2 shows a mirror on the wall behind one of the lamps. X is the point on the lamp. It is 0.19 meters in front of the mirror. The first part says, draw rays from X and locate the image of X. Where is the image of X?
सो याद रखिएगा that your object distance must be equal to the image distance. So if you're 0.19 meters ahead of the mirror, then your image must be 0.19 meters behind. So you'll make a dot over there. Got it? And you will say that this is your image. Make sense? अब उसने कहा draw rays from X and locate the image. So what you'll do is you are going to take 2 rays out from the image. गौर से देखो, I'll zoom in. Mirror के पीछे you'll make them dotted, mirror के आगे you'll make them thick. Again, mirror के पीछे you will make it dotted, mirror के आगे you will make it thick. This step, are you done with this step? The paper that we're doing is on the Instagram channel. You can check it out. वहाँ से पकड़ लो और डाउनलोड कर लो. This is not a particular paper. These are select questions. अब लास्ट स्टेप आपका ये है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को जोड़ना है इनके साथ, इन 2 पॉइंट्स के साथ ऑन द मिरर, एक ये और एक ये. गॉट इट? So this is your incident ray, this is your reflected ray, this is your incident ray, this is your reflected ray. Make sense? ये वीडियो बाद में बिल्कुल रहेगी. मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ ताकि अगर आपके अभी कोई मसले हो तो आप पूछ लो. इंस्टा लाइव रखना है, इंस्टा लाइव बिल्कुल रखना है. वो मैं चाहता पहले पेपर कर लें, उसके बाद इंस्टा लाइव भी कर लेते हैं. क्या ख्याल है इसके फ़ौरन बाद इंस्टा लाइव कर लें? जैसे ये यूट्यूब लाइव ख़त्म हो इंस्टा लाइव शुरू करें फिर, हैं जवानों? फिर गप्पे मार लें, थोड़ी दिल हल्का कर लें. The next part says state the distance between. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. Let me repeat. So Manal, repeating for you. Listen to me very carefully. सबसे पहले आपने देखना है कि पॉइंट X का डिस्टेंस कितना था मिरर से. आपने उतना ही डिस्टेंस पीछे आ जाना है मिरर से और आपने कहते हैं दिस इज वेयर द इमेज इज. वंस यू हैव द इमेज, अब आपने क्या करना है, आपने 2 रेज निकालनी है इमेज से विच विल रैंडमली गो अप. ये आप यहां से इधर भी लेके जा सकते हो, हमें कोई मसला नहीं है, बट मिरर में से गुजरनी चाहिए. सो एक डॉटेड लाइन, फिर एक स्ट्रेट लाइन, एक डॉटेड लाइन, फिर एक स्ट्रेट लाइन, 2 रेज निकालनी. फाइनल स्टेप इज कि आप अपने ऑब्जेक्ट को जोड़ दो अपनी रेज के साथ ऑन द मिरर. सो यहां से यहां पे जोड़ दो और यहां से यहां पे जोड़ दो, एंड दैट्स इट. जी, इट इज़ नॉट टू स्केल. इसलिए तो मैंने सारा ये मेजर नहीं किया. ये 0.19 मीटर्स कहीं से भी नहीं है, बस मैंने रैंडमली 0.19 मीटर बना के लिख दिया. फाइजा, सो गुड टू सी यू. आई होप यू आर डूइंग वेल. अच्छा जी, अब वो कहता है स्टे द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर. भाई बताओ, ये इमेज है और ये आपका इमेज एंड द मिरर कह रहा है, और ये मिरर है. क्या डिस्टेंस है इनके बीच में? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर इमेज एंड द मिरर? इतना आसान सवाल. दिस इज गोइंग टू बी 0.19 मीटर्स. मुझे ये बताओ कि अगर वो ये कह देता कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, तो क्या बोलते? अगर वो ये कहता व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, फिर क्या बोलते?
Shabash. Hello, Khizr Sultan. What is the distance between image and object? Shabash, well done. It would have been 0.19 into 2, which is 0.38 meters. समझ आ रही है सबको? यो लिख दो अगर समझ आ रही है. Well done. अच्छा, वन एडवांटेज ऑफ प्लेसिंग अ मिरर बिहाइंड द लैम्प इन द रूम. भाई हम मिरर क्यों रखते हैं? लाइट के आगे मिरर रखने का क्या फ़ायदा है? लाइट हर जगह पे चली जाएगी ना, वो कमरा ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा. सो द हॉल और द रूम will become brighter. Mirab, this is iPad 20, I think it's 2020, जो latest model है, M1 chip. नौशेर उमेर, लव यू. चले आए इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आज का. A wire is wound around a soft iron core forming a solenoid as shown in figure 11.1. There is a gap in the core, the solenoid connected in series with a 12-volt battery and a variable resistor. The resistance of the solenoid is 0.3 ohms and the variable resistor set at 4.5 ohms. गौर से सुने जी. So इस कोयल की जो रेजिस्टेंस है अपनी, इस कोयल की वो है 0.3 ohms और ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस है 4.5 ohms. वो पहला सवाल ये कहता है कि ये बताओ इस सोलेनॉइड में करंट कितना है. यस मुस्तफा, आई विल बी. Mohammed Zain says, my name is Zain and I live here and I live there as well. Good to know. Acha. So V is equals to IR. EMF is equals to I total R total. V is equals to IR लिखें और इस पे लिखें EMF is equals to I total R total. अब आपको पता है कि ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है और ये जो कॉइल है एग्जैक्टली ये सीरीज में लगे हुए हैं. ये सीरीज में लगे हुए हैं. सो EMF आपके सेल का था 12 वोल्ट्स. करंट आपने निकालना है एंड द टोटल रेजिस्टेंस विल बी 4.8. सो द टोटल करंट विल टर्न आउट टू बी 12 डिवाइड बाय 4.8 and your answer will be 2.5 amperes. Well done. 2.5 amperes. The current in the solenoid magnetizes the soft iron core. Explain how the electric circuit is used to increase the strength of the magnetic field. इस electric circuit को कैसे use किया जाता है? How can we use a circuit to increase the strength of the magnet? मुझे ये magnet, अब यहाँ magnetic field बन रहा है एक. हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो सकता है ऊपर से नीचे भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है. आई वॉन्ट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड. व्हाट शुड आई डू? फातिमा, वेयर डिड द 4.8 कम फ्रॉम? बच्चे, वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस थी 4.5 ohms. This coil had a resistance of 0.3 ohms. So total resistance, because they're in series, so total resistance will be 4.8 ohms. Got it?
अच्छा, अब करना ये है कि हमें करंट बढ़ाना है सर्किट पे. सो यू कैन इंक्रीज, you need to increase the current in the core, and you can do that by decreasing the resistance of the variable resistor. अहमद, बिल्कुल असर का टाइम, मैंने तो असर की नमाज़ पढ़ ली है. ऑलराइट, सो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप भी पढ़ लो. और वी कुड डिक्रीज द रेजिस्टेंस. यस, रेजिस्टेंस वो तो लिख दिया है, बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर. जवानों, इसके अंदर पता है एक चीज़ नहीं चलेगी, वो ये है कि अगर आपने ये लिख दिया कि यू यूज़ अ लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स, तो देखो अगर यहाँ पे मेरे पास 4 टर्न्स हैं, इसमें जो वायर यूज़ होगी वर्सेस जो 10 टर्न्स में वायर यूज़ होगी, उसमें बताओ रेजिस्टेंस ज़्यादा किस में होगी? विच विल हैव मोर रेजिस्टेंस, लेस नंबर ऑफ टर्न्स और मोर नंबर ऑफ टर्न्स? Which will have more resistance? अरीज वही बात करने लगा हूँ. इसके अंदर there are less turns, इसके अंदर there are more turns. More turns will have more resistance. Less turns will have less resistance. इसलिए याद रखें कि करंट बढ़ाने का तरीका ये नहीं होगा कि आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें. नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जानी है आपकी. सो कोई और तरीका ढूंढो. इसलिए उसने आपको वो दिया है, इसलिए उसने आपको वेरिएबल रेजिस्टर अटैच करके दिया है, बिकॉज वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस यू कैन चेंज. Alright, that is why we're saying by decreasing the resistance of the variable resistor. Does it make sense? More number of turns ना लिखाना, गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन में. चलें जी, आगे चलें. Now this is the question that I was waiting for. जी बिल्कुल हाजरा, इन अदर क्वेश्चंस दे डू से उसके अंदर आयरन कोर नहीं होती ना, और उसके अंदर वी आर अज्यूमिंग हाजरा, इन ऑल अदर क्वेश्चंस वी आर अज्यूमिंग दैट द करंट रिमेन्स द सेम. सो मैं कहता हूँ अगर मैंने 2 कॉइल्स यूज़ किए हैं तो मैं उनके अंदर अगर 3 एम्पेयर करंट भेज रहा हूँ वर्सेस इफ़ आई यूज़ 10 कॉइल्स एंड आई एम सेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ करंट, देन this will generate a stronger field. Why? Because you're giving the same current to more number of turns. हम उस सवाल में ये कह रहे हैं, उस सवाल में जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होने से करंट कम हो रहा है. That is why we can't use that technique. Do you understand? जी Naushir, I just explained this, that if you have a coil with 2 turns with 3 ampere current versus 10 coils with the same 3 ampere current, तो फिर जो 10 coils हैं उनका stronger field होगा, लेकिन शर्त यह है कि करंट उतना ही हो. Do you understand? इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में मोर टर्न्स करने की वजह से करंट कम हो रहा है. वाई? बिकॉज पीछे जो सोर्स है वो फिक्स्ड है, वो 12 वोल्ट की बैटरी है.
हाँ, yes. So either you can increase the current or you increase the number of turns. Yes. चलें, अब इधर आए. सो ये मैग्नेट हो गया जी आपका, और उसने कहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द गैप एंड इज पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स. अगर वर्टिकली अपवर्ड्स पॉइंट कर रहे हैं, मुझे बताओ यहाँ पे डॉटेड लाइन के ऊपर इधर इधर कौन सा पोल है? विच पोल इज हियर, नॉर्थ और साउथ? शाबाश, जल्दी से बताएं. इस यहाँ पे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ या साउथ? मूसॉस, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, बट उन्होंने कहा है कि आपने एक ऐसा चेंज लेके आना है. सो यू कांट चेंज द बैटरी. आपको वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है तो आपने वेरिएबल रेजिस्टर को छेड़ना है. बताएं जी यहाँ पे कौन सा पोल है? देयर इज अ फील्ड विच इज पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स. कौन सा पोल है इधर? इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है. दैट इज वाई द फील्ड इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स. डज दैट मेक सेंस एवरीबॉडी? Yes? मेरे साथ हो सारे? अच्छा, अब हम सब ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सीखना है, तो कोई चीज़ पकड़ो, मार्कर पकड़ो, लेफ्ट हैंड के ऊपर IMF लिखो जल्दी से. सेकंड फिंगर के ऊपर I लिखें. ये देखें, मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखें. सेकंड फिंगर पे I लिखें, फर्स्ट फिंगर पे M लिखें, और थंब पे F लिखें. सो IMF. राइट दिस डाउन ऑन योर 3 fingers क्विकली. यू हैव टू डू दिस विद मी. अगर आपके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको परेशानी होती है तो यूं कर लिया करो. एग्जाम में भी when you're inside the hall, when you're attempting the paper, you can write on your fingers inside the hall. अब मेरे साथ हो ये क्वेश्चन करने के लिए. अच्छा, सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ. सो इट्स लाइक नॉर्थ यहाँ पे, साउथ इधर है, तो आपका जो M है दिस शुड बी पॉइंटिंग आउट ऑफ द. सो मेरा पेपर जो है ये देखो, ये मेरा पेपर है. सो मेरी जो M वाली फिंगर है दैट शुड बी पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेज. गॉट इट? मेक सेंस? सॉरी, M इज वर्टिकली अपवर्ड. सो M शुड बी पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड लिखा हुआ है. मैंने आउट ऑफ द पेज की तरफ कॉमेंट पढ़ लिया. M, लेट मी शो दिस टू यू. मैं आपके पर्सपेक्टिव से करता हूं इसको. सो if you can see this, your field is pointing this way, so M should be pointing this way. Guys, are you with me? मैं इसको और zoom in करता हूँ, हो सकता है आपको नजर आ जाए. Your first finger should be pointing upwards. Got it? Magnetic field is upwards. First finger M aligned है with north to south. Are you guys with me? अब I, current should go from P to Q. The current should be going from P to Q. Are you guys with me? Yes? अब बताओ, ये thumb किधर पॉइंट कर रहा है? Is it pointing down the page or is it pointing out of the page? Where is the thumb pointing? Where is the thumb pointing? Where is the thumb pointing, guys? शाबाश. You will say thumb is pointing out of the page. So thumb क्या शो करता है? Force. So ये याद रखना कि यहाँ पे आप कहेंगे the force is out of the page.
पूछा नहीं है उन्होंने, बट आपका जवाब आ गया, ठीक है. डिस्क्राइब द इफेक्ट of the magnetic field on PQ. You will say PQ will experience a force. वो पूछ लिया. PQ will experience a force and you will say out of the page. Make sense? PQ will experience a force out of the page. With me? Everyone? हो गया? क्लेमिस लेफ्ट हैंड रूल क्लियर हो गया. सिर्फ ये IMF लिखने की देर होती है और आपकी फिंगर्स खुद ही अलाइन हो जाती हैं बड़े आराम से. State the effect of increasing the strength of the magnetic field in the gap on PQ. तो मुझे बताओ फोर्स जो है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? Will your force increase or decrease? You will say your force is going to increase. Part B. The starter motor in a car is powered by a 12-volt battery that is positioned next to the motor. You have to calculate the current, the power supplied. So current given है P is equals to VI करें. 12 into 75. What is the answer? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और प्लीज़ याद रखना ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह. मेक श्योर दैट यू आर liking, subscribing, hitting the bell icon. Also follow on Instagram. It'll just keep me motivated to do more. बिल्कुल बिल्कुल. And share and do whatever. So 12 into 75, P is equals to VI. So power आपकी आ जाएगी 900 watts. Suggest and explain why the wires that connect the motor to the battery are very thick. मुझे बताओ thick wire का एरिया ज़्यादा होता है या कम होता है? Thick wire का एरिया ज़्यादा होता है या कम होता है? Thick wire has more area. So if wire has more area, would its resistance be more or less? Its resistance will be less. So thick wires have more area and hence less resistance. So less heat is generated in the wire. And part C. This is the last part for today. A relay is used to switch on a starter motor in a car. Describe how the relay works. So आपने करना क्या है? You're going to take a cell. You will connect it to this part. This is where your starter motor is. And this is your circuit. लेबल कर दें, इसको बॉक्स में डालें. इस पार्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक रिले. और बेशक यहां पे एक स्विच लगा दो. स्विच, पावर सप्लाई,
This is another power supply. Drawing is always necessary. याद रखना, drawing is always necessary. अब क्या होगा? जब आप इस स्विच को क्लोज करोगे, तो इससे एक करंट फ्लो करेगा इस रिले के अंदर. एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट ये होगा कि ये रिले जो है ये मैग्नेटाइज हो जाएगी. You will say that when the switch is closed, a current will flow and your relay will be magnetized and close the switch S2. So आप इसको S2 कह दो. So जब ये पार्ट जब मैग्नेट बनेगा तो क्या होगा? ये इस स्विच को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. स्विच बंद हो जाएगा. जब स्विच बंद होगा तो ये सर्किट कंप्लीट होगा. ये सर्किट कंप्लीट होगा, मोटर ऑन हो जाएगी. Hence connections are made in the starter motor and a current flows through it. Is this clear? Thank you, Ali. What's the box? Is it a core? This box? This is an iron core. ये आयरन कोर है. सो आयरन कोर के अंदर से जब एक करंट पास करेगा तो आयरन कोर मैग्नेटाइज होगी. आयरन कोर मैग्नेटाइज होगी तो ये स्विच S2 बंद कर देगा. जब ये स्विच S2 बंद होगा तो ये मोटर ऑन हो जाएगी. इज दिस सर्किट क्लियर? ये सर्किट आपको बनाना आना चाहिए. दिस डायग्राम विल बी द सेम फॉर ऑल रिले क्वेश्चंस. अगर आपको ये समझ आ गया, आप कोई भी रिले का सवाल कर सकते हो. हाँ जी जवानों. सो इज इट क्लियर? यस. You should label everything, every single thing. Perfect. So, Hashim, thank you, everybody. That is the end. I'm going to go on Instagram now. So if you guys have any questions, so udhar aa jao. Let's have a conversation, quick conversation, और फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह. Thank you so much for being here. It was lovely. I hope that you benefited. Thank you. Take care, everybody. Love you all. Best of luck. We are awarded marks. We are awarded marks for drawing. और नौशेर आपने पूछा है दोनों पावर सप्लाई डिफरेंट क्यों हैं? नौशेर बिकॉज मोटर को चाहिए बहुत बड़ी पावर सप्लाई. अगर आप मोटर को डायरेक्टली जाके ऑन करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? आपको बहुत बड़ा शॉक पड़ेगा बिकॉज वोल्टेज ज़्यादा है उधर करंट 75 एम्पेयर है. इसलिए हम भी करते हैं, हम रिले लगाते हैं. रिले की जो पावर सप्लाई होती है बहुत छोटी होती है, सो इससे आपको डर नहीं होता. सो रिले का मकसद क्या है? रिले का मकसद है टू टर्न ऑन अ हाई वोल्टेज फ्रॉम अ लो वोल्टेज. ये रिले का मकसद है. This box represents the outline of a relay.
सही है। सो ये दोनों मिल के रिले बनाते हैं ना, अब ये एक सर्किट में, ये दूसरे सर्किट में, इसलिए हम इसको डॉटेड बॉक्स से शो करते हैं कि ये मैग्नेटिक रिले है। ठीक है मोमिना, इज दिस क्लियर? द पॉइंट ऑफ द रिले इज क्लियर? नौशीर, आर यू क्लियर कि पावर सप्लाई मोटर की बहुत हैवी होती है, उसको आप डायरेक्टली नहीं ऑपरेट कर सकते, इसलिए आप एक छोटी पावर सप्लाई यूज करते हो। चलें जी, परफेक्ट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। इंशाल्लाह सी यू गाइस वेरी सून, टेक केयर जी, खुदा